पिला माने आउ मत समय नहीं विश करे तो फटाफट सुनो 10th क्लास पिला परीक्षा बाकी है फटाफट सुनो मतलब फिजिक्स पढ़ के राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड दिस इज राइट हैंड दिस इज थंब राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब कौन होची राइट हैंड थंब होची जदी थंब टाइप थंब ना उदाहरणटा जदी उदाहरणटा करंट रो डायरेक्शन शो कला डायरेक्शन ऑफ द करंट चारि जब प्रवेश करछ लाइक गोटे कंडक्टर रे करंट पास करछि ता चारि गोटे मैग्नेटिक फील्ड होछि इफ द करंट इज लाइक दिस द मिडिल द thumb indicates the direction of the current, the other finger shows the direction of the magnetic field. So like that, if the current is moving upward, the field is like this. If the current is moving this one, the field is like this. The current is moving this one, the field is like this. So ये field, if you look at the downward direction and the current is moving upward direction and the magnetic field is anti-clockwise. This is if like this in downward direction, the current is going. Then if you see the upward from top to bottom, then this is clockwise, anti-clockwise, clockwise. Okay, so direction of current in this direction, this is your magnetic field. In this direction, this is the magnetic field, and in this direction, magnetic field like this. Okay, this is the direction of the current, and when current flows around the current, there is a magnetic field. Okay, right hand thumb rule finished.